So this side Nishar from Ornith, and in this video, we will starting searching algorithms. We will be covering linear search and binary search in this searching algorithm playlist. And so today, let's start with our video on linear search. Let's start with linear search. Linear search. Let's take a real life example for linear search. How linear search works basically. Suppose you have a phone. तुम्हारा ये phone है. Okay, you have this phone and it lost somewhere in your room. तुम्हारा ये फ़ोन रूम में खो गया, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले बेड देखोगे, तुम पहले देन उसके बाद टेबल पे जाओगे कि टेबल पे है कि नहीं, देन वहाँ भी नहीं मिला, देन तुम कबर्ड देखोगे, यू गो टू द कबर्ड, देन यू सर्च ऑन इन योर बैग, वहाँ भी नहीं मिला, तो सपोज़ तुम्हें कोई एक ऐसी प्लेस मिल गई, यू फाउंड एन प्लेस वेयर योर लॉस्ट फ़ोन, तुम्हारा लॉस्ट फ़ोन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो जो फ़ोन एग्जिस्ट करता है, उस प्लेस को, ये प्लेस तुम्हारी इंडेक्स हो गई और यू कैन सी द पोजीशन, you can see the position of that element or the phone or the object you found from that place. Then that place will be the index or a position of that target. So let's see how it works. Suppose this is an array 94150 and 3. You got this array. How linear search works? It basically iterates over the whole array, checks all the element until the target is full. Suppose your target is equals to 3, then it iterate is 9 is 9 equals to 3, it says no. Is 4 is equals to 3, it says no. Is 1 equals to 3, it says no. Is 5 is equals to 3, it says no. Is 0 equals to 3, it says no. Is 2 is equals to 3, it says no. And it goes up to the length n minus 1, where n is equals to the length of the array. Okay, that is, you return the index of length where it is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It returns 6 because 3 is equals to 3. It returns that index basically. This is linear search. Again, let's summarize. Suppose you need to find 5. It's your target. You need to find. So you iterate from 0 up to length minus 1. And here length minus 1, what is length? 9, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 minus 1. Iterate till 6th index. So at first at I is equals to 0, which is 9. 9 checks with the target 5. Is it equal? No. It says no. It goes then I is equals to 1. It checks is 9 is equals to, sorry, it checks 4. Is 4 is equals to 3? It says no. Then it goes to I is equals to 2. It's check is 1 is equals to 3. It says no. Sorry, it's 1 is equals to 5. It says no. Then it goes to I is equals to 3. It checks is 5 is equals to 5. It says yes. So you exit out from the loop or you exit out from the function and says that target is found. That's basically a linear search is. Okay, so you get the idea. It goes from starting from the 0th index up to the index n minus 1, checking all the elements until the target is found. जब तक तुम्हें तुम्हारा टारगेट नहीं मिल जाता, तुम हर एलिमेंट पे जाओगे एंड उस टारगेट को फाउंड करोगे एंड जहां तुम्हें वो मिल गया तुम उसका इंडेक्स रिटर्न कर दोगे. एज सिंपल एज दैट. ये तुम्हारा लीनियर सर्च प्रोग्राम है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द disadvantage of linear search. What is its disadvantage? First thing, it's not good for large data sets. Large data sets. अभी तुम खुद से समझ सकते हो कि why it's not good for large data sets. Suppose you have an array of starting from 9, 1, 2 and goes up to very long, up to hundred of thousands of elements. ठीक है, and तुमको एक टारगेट मिला. Suppose it is 400. Okay, and 400 exists at n minus, let's say, 3 position. Suppose. So it starts from 0, goes up to n minus 3, check with all the elements of the array, and then you return n minus 3. So it's taking too much time. The time complexity becomes higher. So
वी विल नॉट डू दैट बिकॉज हमें जल्दी से जल्दी एक एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसलिए हमारे ये थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज? इसका एडवांटेज बेसिकली ये है, इट्स गुड फॉर स्मॉल एंड मीडियम डेटा सेट्स। स्मॉल एंड मीडियम डेटा सेट्स, it works for both sorted and unsorted array। बेसिकली तुम्हारा ये जो लीनियर सर्च है वो तुम्हारा सॉर्टेड एरे के लिए भी चल जाएगा, अनसॉर्टेड एरे के लिए भी चल जाएगा, बिकॉज इट गोज सीक्वेंशियली। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके। एंड दूसरा चीज़, एक लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, वो आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन द लिंक लिस्ट वीडियो। सो वो लिंक लिस्ट वाली वीडियो देखना, उसमें तुम्हें कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन लिंक लिस्ट फर्स्ट एंड तुम्हें अभी लिंक लिस्ट के बारे में पता नहीं है, सो नो वरीज। लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च। ये अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ विल यू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च? तुमने देखा, यू सॉ कि इट गोइंग फ्रॉम zeroth index up to the n minus 1 index, iterating every element, taking all the element by iteration and checking if it's equals to the target or not. If it's equals to the target, and return key, if it equals to the target, then return, or say if the target is found basically. So let's create our function body। ओके, तुम यूजर से उसकी लेंथ ले लोगे। यू नीड एन आइट्रेशन के लिए भी तुमको एक चाहिए होगा, एंड दूसरा चीज़ तुम्हें एक टारगेट भी चाहिए होगा। ओके, तुमने लेंथ ले ली, प्रिंट एफ करके स्कैन एफ करके लेंथ ले ली, देन उसके बाद तुम टारगेट पे आते हो। सॉरी, तुम एक डिक्लेयर करते हो एरे, अब जो भी तुम उसकी लेंथ है, ठीक है। फिर तुम लूप चला लेते हो आई ज़ीरो से आई लेस देन लेंथ पे आई प्लस प्लस प्लस, एंड स्कैन एफ करके एरे में वैल्यूज इनपुट करा लेते हो यूज़र से। अब हमारा लीनियर सर्च का इम्प्लीमेंटेशन, हाउ विल यू डू लीनियर सर्च? सो हमने देखा इट गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। यप, इट गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। सो उससे पहले हम टारगेट भी एंट्री करा लेते हैं, तो हम प्रिंट एफ कर लेंगे एंटर टारगेट। ओके, स्कैन एफ से टारगेट ले लेंगे जो भी टारगेट था। ओके, नाउ लीनियर सर्च हमने देखा था इट्स गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। सो आई इज इक्वल्स टू जीरो गोइंग अप टू द लेंथ माइनस वन, लेंथ minus 1 and plus plus। if if you found, let's take one more variable, let's say exist। okay, ये मैं बताऊंगा क्यों लिया। we'll check, हम array से every element, we will pick out every element by taking the index and checks, compare with the target, if it's equal I simply say print found and then break from the loop or exit out from the loop, or if you want to use you use, no matters। okay, अगर नहीं, अगर नहीं मिलता है तो यू से एग्जिस्ट इक्वल्स टू वन, बिकॉज अगर तुमने यहाँ पे ब्रेक यूज़ करा है तो वो नीचे वाली स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट करेगा। अगर ब्रेक नहीं है तो ये यूज़ मत करना प्लीज़। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ब्रेक डोंट यूज एग्जिस्ट, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे आगे मैं कर दूंगा इफ एग्जिस्ट इक्वल्स टू वन है, जस्ट से प्रिंट एफ नॉट फाउंड एंड देन रिटर्न। तुम्हारा गेट सी एच वगैरह जो है लगा लेना। इट्स बेसिकली दिस। अब ड्राई रन करके देख लेते हैं क्या क्या था हमारा ड्राई रन में। लेंथ है, टारगेट है, लेंथ पहले एंटर करानी है, देन एरे बनाना है, एरे का लेंथ एंड देन टारगेट एंटर कराना है, देन ऐसे ऐसे चलेगा। गॉट इट। तो हमने सब कुछ लेंथ एंटर करा ली, लेट्स से 5, हमने एरे एंटर करा लिया, लेट्स से
क्या एरे एंटर करा दे, लेट्स से 2 4 7 5 एंड 3, एंड हमने टारगेट दे दिया लेट्स से 3। ओके, तो हमारा 0 से n-1 चल रहा था, n अपना हमारा हो गया 5, तो ये 4 तक चलेगा। इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। चेक करेगा एट i इज इक्वल्स टू 0, क्या 2 हमारा 3 के इक्वल है, इट सेज नो, देन i इज इक्वल्स टू 1। लेट्स चेक, क्या 2 में क्या है हमारा 4, क्या 4 हमारा 3 को, इट सेज नो, देन i इज इक्वल्स टू 2। लेट्स चेक 7 इक्वल्स टू 3, इट सेज नो, देन i इज इक्वल्स टू 3। इट्स चेक इज 5 इक्वल्स टू 3, इट सेज नो, 5 हमारा 3 के इक्वल नहीं है, एंड देन i इज इक्वल्स टू 4, देन which is 3, is 3 is equals to 3, it says yes, तो हमारा yes आ गया, it will print found, break out from the loop, yep, and then return। तो ऐसे हमारा लीनियर सर्च हुआ एंड हमें 3 एज एन मिल गया एंड वी डिस्प्लेड फाउंड। सपोज आर एलिमेंट वुड बी 1, जो कि उस पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बेसिकली क्या करता, इट्स चेक विद एवरी एलिमेंट, ये कंडीशन तुम्हारी कभी सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो एग्जिस्ट इक्वल टू 1 करता, एंड देन it prints not found and then exits out from the function। Okay, so this was the implementation, and now we are moving to uh, moving to how to code it in VS Code. I will show it for you, and so let's start with writing our linear search code. Let's first include our header file stdio.h, integer main, let's declare our main body. Now what we need variable called length, and we also need a variable called I for the iteration. Then we need a target by which it will be compared that the element is exist or not, and we will take also a variable exist, we discussed it here. So let's start. We need a variable called length, we need I, we need exist, we need and target। Okay, now let's take input from the user of array की length क्या होगी, scanf percentage d and of length, then we will declare the array of length जो कि यूजर से हमने इनपुट लिया है, एंड देन हम उस पर यूजर से वैल्यूज डलवाएंगे, एस आई लेस देन लेंथ less than equals to length minus 1 I plus plus। I say printf enter the element of which index, that is percentage d I। Okay, get it the address of that index। हमने array के लिए वैल्यूज इनपुट करा लिए हैं, now we want the target, enter the target, scanf percentage d and target। Okay, now our linear search implementation begins from here, linear search। now हमने देखा था it going from 0 to n minus 1 where n is the length of the array। So again I starts from 0 goes up to I less than equals to length minus 1 I plus plus। then if अगर array का I तो उस index element का target equal है, equals to अगर target है, तो we say कि yes entered element is found at index I, which is I, we're missing a semicolon, and we say exist equals to 1 and then break। Okay, why we put exist here, because exist becomes 1 only if our element exists। Okay, otherwise it says exist equals no, otherwise exist remains as it is, which is 0। So we'll say if exist equals to 0, then print element or the target not found, and just say return। Okay, we are not doing this in Turbo C, so please, if you are doing it, then please do these things, clear SCR, these methods and these header files। Let's run this program. Let's compile it first। Let's take our length is 5 and our array is 2 4 7 5 and 3, and our target is 3।
So and see the entered element is found in index number 4. Let's again run this 2, 4, 7, 5, and 3. And our entered target will be 1. It says target not found. So this is the implementation of linear search. In the next video, we will be discussing binary search. So please check that out जब भी वो upload होगी, and see you in the next video, which is binary search. So see ya.